Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing great by the grace of Almighty. Today we are going to start our Unit 3 of Mathematics, Class 10th. Students, in this unit we are going to study ratios and proportions. Ratios refer to things that are relative to each other. Like if here is A ratio B, that means how much will be B if A is 1. So ratio means like if 1 ratio 2, that means if we have 1A, there will be 2B. If we have 2A, there will be 4B. We have 3A, there will be 6B. So ratio means the relation between two things, like the quantitative relationship. And proportion means that the relation of the values, like if I have A over B, proportion B over C over D, which means if we increase one of the things, what will happen to the next thing? Will it be increased or will it be decreased? So we are going to start our exercise 3.1. First 6 questions are very simple. The question number 6 and 7 are similar. So I have chosen the question number 7 for you. So we will start question number 7. In question number 7, it says if 10 is added in each number of the ratio 4:13, 4:13, we get a new ratio 1:2. What are numbers? So if the ratio is 4:13 and we add 10 in them, the new ratio will become 1 and 2. We have to find out the numbers. So we will let the numbers be 4x ratio 13, 4x and 13x. So that means if we add 10 between to the both numbers, that will become equal to 1:2. So 4x plus 10 divided by 13x plus 10 is equal to 1/2. Students, ratio means division. Okay, so 4x is the number we let, and we add 10 in both of the numbers. So the numbers are 4x and 13x, and we add 10 in each number. The new ratio will become 1:2. Now we solved it by cross multiplication. So by cross multiplication we get 2 into 4x plus 10 is equal to 1 into 13x plus 10. So this becomes 8x plus 20 is equals to 13x plus 10. So now students, the values with x variable will go to one side, and the other values, the constants, will go to the other side to find out the value of x. So here, if we take 13 here on this side, that is 8x minus 13x is equal to 10 minus 20. So that is 5 minus 5x is equals to minus 10. Students, x is equals to minus 10 over minus 5. This minus will be cancelled
and now the answer is 2. So x is equal to 2. Now if we put this x is equals to in our this ratio, so the new number is, the number will become the new numbers are 4x ratio 13x. So 4 into 2 ratio 13 into 2, that is 8 ratio 26. Okay, and if we cut them down, the new ratio, the numbers are 8 and 26. So we will write the required numbers are 8 and 26. So students, this is our answer. Again I will repeat the question in Urdu. क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिनकी रेशो है 4 और 13, ठीक है, और उनमें अगर हम 10 ऐड करते हैं, दोनों नंबर्स में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो जो नई रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2. तो नंबर्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. तो हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से नंबर्स कि वो नंबर्स हैं 4x इंटू रेशो 13x, यानी और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, 4x जो हमारा नंबर है यानी एक नंबर है उसमें 10 ऐड करेंगे, और 13x जो नंबर दूसरा है हमारा उसमें भी हम 10 ऐड करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर. सो दोनों नंबर्स में 10 ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 रेशो आ जाएगी. तो इस रेशो को क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी. तो 2 इंटू 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x प्लस 20. सिमिलरली इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, दैट नंबर रिमेन्स द सेम. तो वही नंबर रहेगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएँ और दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो x वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने से हमारे पास 5x आ रहा है माइनस का, और यहाँ पे -10 आ रहा है. ये -5 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 2s are 10 होता है. तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है. तो हमारे पास ये जो रेशो बनी थी नंबर्स फाइंड करने के लिए, उसमें हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है. तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x रेशो 13x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 13 इंटू 2, दैट इज़ 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 and 13 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 26. So 8 and 26 are our required numbers. So students, this was our question number 7. Now we will move on to question number 8. Students, this question is very important. Question number 8, and it is a long question. Question number 8 is find the cost of 8 kg of mangoes if 5 kgs of mangoes cost rupees 250.
So here is the question, students. If 5 kg of mangoes are of rupees 250, what will be the cost of 8 kg of mangoes? This is very simple question. You have done it in younger classes, junior classes like 6, 7. You have done these word problems. Now we are going to solve it by ratios. So if we let rupees x is the cost of 8 kg of mangoes. So x is the cost. So in one side we will write weight of mangoes, and the other side or equal to price of mangoes. So now here it is 8:5 equals to x ratio 250. So now we can write it 8/5 is equal to x over 250. Now if we do the cross multiplication, we need only the value of x. So this value will go to the other side and will be multiplied. So it will be 8 multiplied by 250 divided by 5 is equals to x. If we cut it short, that is 5 50s are 250. So 58s are will be 8 zeros are 0, 8 5s are 40, that is 400. So x is equal to 400. The cost of 8 kgs of mangoes is 400. So we will write the cost of 8 kgs of mangoes is rupees 400. Students, that is our answer. Now we will move on to question number 9. That again is very important question. Question number 9 is, if A ratio B is equal to 7:6 and find the value of (3A plus 5B ratio 7B minus 5A. Now students, first of all we have to write it like this. Solution: A ratio B is equal to 7:6. That implies A over B is equals to 7/6. Now (3A plus 5B ratio 7B minus 5A) dividing by B.
because we have to write it in the form of a over b, so we will divide the whole value by b. So that becomes 3 into a over b plus 5 into b over b ratio 7 into b over b minus 5 into a over b. So these b's will be cancelled. Now here it is 3a over b plus 5 ratio 7 minus 5a over b. Students, we have the value of a over b, so we will put the value of a over b in it by putting the value of a over b in it. Now we will get 3 into 7 over 6 plus 5 ratio 7 minus 5 into 7 over 6. Here we have 3 2s are 6, so 7 over 2 plus 5 ratio 7 minus 35 over 6. 7 5s are 35. So if we do the by taking LCM, here we get 2, 7 plus 10, and here 6 is the LCM, so 6 7s are 42 minus 35, so that is 17 over 2 ratio that is 7 over 6. So if we multiply both sides by 6, multiplying both sides by 6, we get 6 into 17 over 2 ratio 6 into 7 over 6. Here we have 3 2s are 2 3s are 6, so 3 17s are 51 ratio 6 is cancelled, so 7, so 51 ratio 7, so 3a plus 5b ratio 7b minus 5a is equal to 51 ratio 7. So that is our answer, students. Again, students, I will repeat the question. If a ratio b is equal to 7 ratio 6, find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a. First of all, we will write in the form of fraction, not in the ratio. A over b is equal to 7 over 6. जब हम इसको a over b is equal to 7 over 6 लिख लेंगे, उसके बाद हमने फाइंड करना है 3a plus 5 ratio 7b minus 5a की वैल्यू क्या आती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको a over b की शक्ल में लिखने के लिए पूरी वैल्यू को b से डिवाइड कर देंगे. जब हम इसको b से डिवाइड करेंगे तो ये b वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी और a के नीचे b आ जाएगा. तो देखें 3 इंटू ए ओवर बी प्लस 5, 7 माइनस 5 इंटू ए ओवर बी आ जाएगा.
तो हम यहाँ पे a और b की ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7/6 वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ वैल्यू आ जाएगी 3 × 7/6 + 5 7 - 5 × 7/6। जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 + 5 और यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 35/6 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम दोनों साइड्स पे लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 2 5 से मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 7 6 are 42 और ये 6 से कैंसिल होके 35 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करें तो ये 17/2 आ जाएगा और ये 7/6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस नीचे वाले बटे को ख़त्म करने के लिए, बटे के नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। जब दोनों साइड्स पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 are 6 होता है और 6 1 are 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 17 से मल्टीप्लाई होकर 51 आ जाएगा और इस साइड पे 7 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 3a + 5b रेशो 7b - 5a = 51/7। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क us on below this video. You can ask any question and you can also WhatsApp us or you can come to school for further assistance. Until the next video, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Take care of